Hello everyone, I am CA Manoj Kumar Sabat. So, in this video, we will be discussing about the sources of finance, right? The classification of the sources of finance, right? So, firstly, let us discuss on the basis of the period. On the basis of the period, the finances are classified as the long term, the medium term, and the short term. राइट शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि जो भी फाइनेंस हम रेज करते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 12 months दे आर कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म फाइनेंस सो जो मीडियम टर्म होता है दिस इज जनरली इन बिटवीन 1 year and 5 years right so if it is more than 5 years we call it as long term. नाउ कमिंग टू वन बाय वन प्लीज लिसन वेरी केयरफुली तो पहले वाला होता है वो इक्विटी शेयर्स है राइट इक्विटी शेयर्स आर जनरली ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म फाइनेंस जनरली ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म फाइनेंस राइट ऐसा नहीं कि मैं शेयर जो खरीदता हूँ मुझे 5 साल बाद ही भेजना पड़ेगा 10 साल बाद ही भेजना पड़ेगा मैं आज खरीद के कल भी भेज सकता हूँ इन दैट केस आपका जो शेयर कैपिटल है वो नहीं आएगा लॉन्ग टर्म में वो आएगा शॉर्ट टर्म में राइट. So generally, whenever you purchase the equity shares, you generally intend to hold the shares for a longer period of time, right? So that has become your first point, which is called as the equity share capital, which is a long-term source of funds. And then comes your retained earnings, right? Retained earnings. Listen, what are called as retained earnings? Retained earnings is the what? Accumulated profits of the company. Retained earnings are called as the accumulated profits of the company. राइट कंपनी का जितना भी प्रॉफिट्स आता है सो अगर आप डिविडेंड पेमेंट करते हो तो ठीक है अगर डिविडेंड पेमेंट करने के बाद कुछ बचा है तो वो सारा प्रॉफिट्स क्या होता है रिटेन अर्निंग्स में चले जाता है राइट सो इन द नेक्स्ट ईयर वेन एवर और आफ्टर ट्रांसफरिंग टू द रिटेन अर्निंग्स सो वेन एवर कंपनी इज विलिंग टू हैव सम फाइनेंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट विल सी वेदर रिटेन अर्निंग्स आर देयर आर नॉट राइट सो कितना भी फाइनेंस चाहिए होता है ना उसमें क्या होता है कि पहले रिटेन अर्निंग्स को लेस किया जाता है क्योंकि उतना पैसा ऑलरेडी हमारा कंपनी में अवेलेबल है बाकी पैसा को हम इंतजाम करना पड़ेगा. And then comes preference shares. See, preference shares are the shares where preference is given in two cases, right? The first one is एट द टाइम ऑफ गिविंग द डिविडेंड जब डिविडेंड दिया जाता है अगर आपका कंपनी में कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होता है तो उनको पहले हम डिविडेंड देते हैं उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है राइट सो और एक बात भी है अबाउट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो प्रिंसिपल पेमेंट होता है ना सो वो होता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप राइट सो जब वाइंडिंग अप प्रोसीजर होता है तब कंपनी क्या करता है जो भी एसेट्स है वो सब भेज देता है जितना भी पैसा आया वो सब लाइबिलिटीज क्लियर करके जाता है सो आउटसाइडर लाइबिलिटीज जो होता है पहले क्लियर कर देता है करने के बाद अगर कुछ पैसा बचा हुआ है तब रिटेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद अगर कुछ पैसा बचा हुआ तो तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा राइट इसलिए उसका नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर सो प्रेफरेंस कितने बार देना पड़ता है 2 times एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द डिविडेंड द सेकंड वन इज एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जब भी जो कैपिटल पेमेंट होता है तब पहले हम रिटेन सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं राइट एंड देन कम्स डिबेंचर्स सो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स मीन्स वन एंड द सेम राइट डिबेंचर इज अ लोन इंस्ट्रूमेंट राइट सुनिए whenever the business want to get the loan means particularly a company want to get the loan so it can either get from a single entity like a bank a financial institution from another company or it can also get from public at large right so in order to get the loan from public at large company need to issue certain instruments so that public will purchase and the money will flow inside the company right such a type of a loan instrument is called as debentures right generally we use the word called as bond right so you can use the word bond or you can also use the word debenture right so debenture also is issued for a long term purpose right so it is also one type of your long term financing instrument right so since the debenture is a loan instrument on the debenture interest is payable right interest is payable generally interest is payable at the end of the year so that happens with the interest now जब भी लोन होता है ना उसमें टू कंपोनेंट्स होता है एक तो आपका इंटरेस्ट होता है दूसरा आपका प्रिंसिपल पोर्शन होता है इंटरेस्ट कब पेमेंट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर पेमेंट होता है जो प्रिंसिपल पोर्शन होता है कब पेमेंट होता है जो टेन्योर होता है राइट जो 5 years 8 years 10 years जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो मेच्योरिटी पीरियड के बाद पेमेंट किया जाएगा राइट प्रिंसिपल अमाउंट right so debenture always will be having two components one is the interest as well as the principal portion right so आपने सुना होगा कि 10% debentures 15% debentures 8% debentures so there the word percentage indicates what the coupon rate right coupon rate is also called as interest rate
And let us go further with our next instrument, which is our loan from financial institutions. Right, financial institutions जो है मीन्स अदर देन बैंक्स, राइट, बैंक्स को छोड़ के और जो भी इंस्टीट्यूशंस आपको फाइनेंसिंग दे रहा है उनको हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट, वी कॉल इट एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द लोन फ्रॉम द बैंक्स, राइट. अगर आप बैंक में जाते हो एंड यू गेट ए लोन फ्रॉम अ बैंक, देन वी कॉल इट एज अ बैंक लोन, राइट. अगेन द बैंक लोन कैन बी ऑफ टू टाइप, शॉर्ट टर्म और द लॉन्ग टर्म, राइट. यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म का बात कर रहे हैं, राइट. Right, so if any company goes to any bank and it gets a loan, right, then it becomes a loan from a bank, right. For example, say my company goes to ICICI bank and gets a loan for 10 years, it is called as a bank loan, right. If I go to any financial institutions का मतलब ये होता है कि NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होता है, right. For example, say my company has like approached Cholamandalam Finance to get some money. So then I call it as loan from a financial institution. Why? Because Cholamandalam Finance, Sundaram Finance, they are not banks, but they are called as financial institutions. And then comes our medium term loans, right? Medium term loans also can be obtained from the banks, right? So as I told you that the company can get the loan from the various banks either for short term, or it can also get for long term, or it can also get from medium term. See, this long term and medium term is not defined anywhere in the general parlance. In the general business parlance, we call it as long term, medium term and short term, right. So as I told you in the starting of the video that short term का मतलब ये होता है कि less than 12 months अगर आप कुछ फाइनेंस लेते हो उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोला जाता है, राइट. अगर आपका फाइनेंस 1 year से 5 years तक है, then we generally call it as the medium term, and more than 5 years we call it as a long term, right. So coming to these medium term loans, loan from the banks. So this one already we have discussed, and then comes public deposits. See, public deposits are the deposits which are collected by companies, right? Corporate companies जो होता, I mean corporate जो होता है ना, they have the power to collect the public deposits if they are meeting certain criteria, right? क्योंकि हर एक कंपनी public deposits नहीं ले सकते हैं, right? For example, say private company के तो it is prohibited to go to the public. So in that case, for private companies, this public deposits is not possible, right. For public companies, again they need to follow the provisions of the Companies Act in order to get the public deposits. Like there are some sections like 73 to 76 of the Companies Act which gives the power for the companies to collect the deposits and then do the repayment, right, and other provisions are there, right. So if they are satisfying those conditions, then those public companies are eligible for this public deposits, right. Next, coming for this loan from financial institutions. Already we have discussed here, loan from financial institutions can be a long term as well as short term. और long term भी हो सकता है, sorry, long term भी हो सकता है, medium term भी हो सकता है, right? Short term नहीं, short term भी हो सकता है, no doubt in that. देखो यहाँ पे बैंक्स इन शॉर्ट टर्म ऑल्सो यू कैन सी द बैंक्स. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपसे बैंक से कोई फाइनेंस लेना चाहते हो तो आप मीडियम टर्म के लिए भी ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हैं, राइट. एंड द लास्ट वन इज लीज फाइनेंसिंग, राइट. सी, लीज फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि लीजिंग, राइट. सो लीजिंग का मीनिंग आपको पता है. सो इफ वन पर्सन गिव्स एनी एसेट ऑन लीज, रेंट ऑन टू एनी अदर पर्सन, देन वी कॉल इट एज अ लीजिंग agreement, right. So why assets are taken on lease? Why? Because you don't have that much money to purchase. उतना पैसा नहीं है आपके लिए खरीदने के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं, भाड़े में लेते हैं, राइट, रेंट में ले लेते हैं, राइट. सो जो रेंट आप पे करते हो, जो रेंट जो होता है ना, लीज रेंटल जो होता है, वो जब पेमेंट आप करते हो, उस पेमेंट के अंदर दो कंपोनेंट होता है. एक तो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, दूसरा जो होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट भी होता है, राइट. इनडायरेक्टली whenever we use the asset, so it is like we are using that asset for the majority of the life of the asset, right. If you purchase the asset also, you will be using for the majority of period for the life of the asset, isn't it? So now if you purchase and use it, it has become your own asset. Now if you take the asset on rental basis and you use it, it is like you don't have the money to purchase and the other party is providing you that facility to use the asset, right, for the majority period of the life of the asset, right. So in indirectly he is giving finance to you in order to use that asset. Means asset आप
यूज करने के लिए इनडायरेक्टली वो फाइनेंस दे रहा है, इसलिए जो लीज फाइनेंसिंग होता है ना वो मीडियम टर्म में आता है। कभी कभी लीज फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म में भी आ सकता है, राइट? वाई? बिकॉज सम लीज एग्रीमेंट्स आर फॉर बिगर पीरियड, राइट? 10 years, 12 years, 15 years भी हो सकता है, 20 years भी हो सकता है। इन दैट केस दिस लीज फाइनेंसिंग विल नॉट कम अंडर मीडियम टर्म, इट इज गोइंग टू कम अंडर लॉन्ग टर्म, राइट? आर वी डन विद दिस लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म, एंड देन कम द शॉर्ट टर्म, राइट? सो वंस अगेन, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? जो भी फाइनेंस आप लेस देन 12 months के लेते हो, सो इन दैट केस वी कॉल इट एज शॉर्ट टर्म फाइनेंस, राइट? इन दैट द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेड क्रेडिट, राइट? ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है? whenever you purchase any raw material, then you get credit from your suppliers, right? क्रेडिट का मतलब ये होता है कि certain number of days will be given for doing the payment, right? Immediately after you purchase the goods, you need not do the payment, right? So they'll give some 10 days, 15 days, 30 days, 50 days to do the payment, right? Means for that many number of days, you need not do the payment, right? Which means that many days you can use the money for your own business without doing the payment to others. Means indirectly they are giving some financing benefit to you. So this trade credit will come under short term financing. And then comes the concept of factoring, right? Listen, factoring is a concept where the company sells the receivables, right? Receivables का मतलब ये होता है debtors, right? Debtors मतलब क्या होता है? आप जो क्रेडिट बेसिस में सेल किए एंड द कस्टमर्स पेमेंट करना है आपको, उनको हम डेटार्स बोलते हैं, राइट? जो डेटार्स होते हैं, सो दे आर नॉट इमीडिएटली कन्वर्टेबल इनटू कैश, राइट? बट देर इज सम अदर बिजनेसेस हु परचेज दिस डेटार्स फ्रॉम यू, राइट, एंड डू द पेमेंट टू यू, राइट? सो डेटार से आप पैसा लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? सो उस टाइम को बचाते हुए ये जो फैक्टरिंग फैक्टर्स होते हैं ना, क्या करते हैं कि आपका रिसीवेबल्स खरीद लेते हैं एंड आउटराइटली दे आर गोइंग टू डू सम पेमेंट, राइट? एग्रीमेंट होगा आपका। सो विच मीन्स यू आर गेटिंग द मनी मच इन एडवांस, right? And you need not have the burden of collectivity collection, that is called as factoring, right? Now this factoring, immediately you are going to get the money, so it is one type of this short term financing. And then comes banks. Already I have explained about the banks. And then comes commercial papers. Listen, so commercial papers are issued by the banks and some corporate companies, right? Generally the high net worth companies and sorry, the high net worth companies, जो भी companies के पास high net worth होता है and जो भी companies के पास बहुत ज्यादा क्रेडिट रेटिंग होता है, मीन्स बहुत रिप्यूटेशन ज्यादा होता है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रेडिट रेटिंग देते हैं, राइट? दे कैन इशू द कमर्शियल पेपर्स, राइट? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? राइट? So that is all about commercial papers, right? Commercial papers are issued by the corporates, and only those corporates which are having high credit rating agents, high credit rating from the credit rating agencies, right? जैसे कि आपका क्रिसिल हो गया, ICRA हो गया, so these are the credit rating agencies, right? जैसे कि हमारा जो इंडिविजुअल सिबिल स्कोर होता है ना, वो हमारा क्रेडिट रेटिंग है। सो लाइकवाइज कंपनीज ऑल्सो विल गेट द क्रेडिट रेटिंग, राइट? कंपनीज का भी क्रेडिट रेटिंग होता है। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होता है, वो वाला कंपनीज क्या करते हैं कि दे गिव क्रेडिट रेटिंग फॉर द कंपनीज, राइट? जिसका जो हाई क्रेडिट रेटिंग होता है, सो दे विल बी इशूइंग दिस कमर्शियल पेपर्स, एंड दिस कमर्शियल पेपर्स विल कम अंडर वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज मनी मार्केट, राइट? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं इसको, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, राइट? एंड दीज आर नॉट इशूड इन स्मॉल डिनोमिनेशंस। ये स्मॉल डिनोमिनेशंस में नहीं होता है, ज्यादा बड़ा बड़ा डिनोमिनेशंस में होता है, क्योंकि जो कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं, सो दे आर वेरी वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, कंपनीज, बैंक्स, दे इन्वेस्ट इन lakhs and crores, right? And these commercial papers generally they are issued for 91 days, right? 91 days, right? 7 days to 91 days they are issued, right? And they can be issued in any denominations. Generally it will be in the denomination of 1 lakh or in the multiples of 1 lakh. Good. Now next let us continue with our basis of ownership, right? Ownership के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन होता है, सो ओन फंड्स होता है, borrowed funds होता है, ओन फंड्स होता है, लोन फंड्स होता है, राइट? So on the basis of ownership it has been classified as owners funds and then the borrowed funds, right? So owner funds क्या होता है? Nothing but the owners of the company will do the investment, right? So that is called as owners
funds. So equity shareholders are regarded as the owners of the company, right? Equity shareholders जो है, जो पैसा उन्होंने दिया था, so उनको बिजनेस का जो कंपनी का जो है मालिक माना जाता है, राइट? एंड नेक्स्ट रिटेन अर्निंग्स. रिटेन अर्निंग्स क्या होता है? जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता है. यहाँ पे मैं कहा था, राइट? सो रिटेन अर्निंग्स आर गोइंग टू बिकम योर accumulated profits, right? So these accumulated profits also belong to shareholders, राइट? सो इक्विटी कैपिटल जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो तो वैसे भी इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा है, राइट? एंड जो रिटेन अर्निंग्स होता है, जो प्रॉफिट्स होता है ना, जो प्रॉफिट्स भी एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो ओनर्स फंड्स में आपका इक्विटी शेयर्स आ गया एंड देन रिटेन अर्निंग्स आ गया. एंड देन बोरोड फंड्स का मतलब क्या होता है? लोन फंड्स होता है, राइट? जो उधार लिया है आपने, राइट? दे आर कॉल्ड एज बोरोड फंड्स. सो इन दैट we have the first point as debentures, where I have already explained it. लोन फ्रॉम बैंक्स हो गया हमारा, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर्स, राइट? सो दिस हैज बिकम योर बोरोड कैपिटल. एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द सोर्स ऑफ जनरेशन. मींस जो पैसा आता है आपका कंपनी से, कहाँ से आता है, वो सोर्स क्या है, वो सोर्स कहाँ से जनरेट होता है वो पैसे, राइट? ऑन दैट बेसिस योर फंड्स आर क्लासिफाइड एज इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस. इंटरनल सोर्स का मतलब क्या होता है? कंपनी के अंदर जो जनरेट होता है, राइट? कंपनी का अंडर जो अंदर जनरेट होता है उसको हम इंटरनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कहते हैं, राइट? जो कंपनी के बाहर से जनरेट होता है, दे आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल सोर्सेस. इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस, right? See, please don't confuse that. Whatever we have discussed on the base of period, again it is repeating in the ownership, and again it is repeating in the source, right? So the funds will not go anywhere. Means the different type of funds, whatever we are discussing now, so that is not changing, right? On different basis we make different types of calculation. Like देखो, यहाँ पे on the basis of period यहाँ पे equity shares आया, on the basis of ownership यहाँ पे भी equity shares आया, एंड सोर्स के हिसाब से जब हम क्लासिफाई करते हैं यहाँ पे भी इक्विटी शेयर कैपिटल आया, राइट? अगेन डोंट आस्क मी ए क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन दैट सर यहाँ पे तो इक्विटी शेयर्स आया, फिर यहाँ पे क्यों इक्विटी शेयर्स आया? क्योंकि हम अलग अलग से क्लासिफाई कर रहे हैं. अगर आप पीरियड के हिसाब से क्लासिफाई करते हो तो लॉन्ग टर्म के अंदर वो क्लासिफाई होता है. अगर आप ओनरशिप के हिसाब से क्लासिफाई करते हो तब ओन फंड्स में आता है. अगर आप सोर्स ऑफ फाइनेंस के हिसाब से आप क्लासिफाई करते करते हो, इन दैट केस इट इज गोइंग टू कम इन इंटरनल सोर्सेस, राइट? क्योंकि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कहाँ से जनरेट होता है भाई? ओनर से जनरेट होता है, इसलिए वो इंटरनल सोर्सेस में आता है. रिटेन अर्निंग्स जो होता है, कंपनी के अंदर जो बिजनेस किया हुआ है, कंपनी के अंदर में जो प्रॉफिट्स है, उन वो इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा है, राइट? इक्विटी शेयर होल्डर्स का हिस्सा है. इट दैट इज द रीजन व्हाई इट इज क्लासिफाइड अंडर इंटरनल सोर्सेस, राइट? एंड कम्स टू एक्सटर्नल सोर्सेस, मीन्स कंपनी का बाहर से जो पैसा जनरेट हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस, राइट? सो उसमें क्या आता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आता है, बैंक्स आता है, प्रेफरेंशियल कैपिटल, पब्लिक डिपॉजिट्स आता है क्योंकि पब्लिक एट लार्ज से कलेक्ट किया जाता है, डिबेंचर्स भी पब्लिक से कलेक्ट किया जाता है, लीज फाइनेंसिंग, some party from outside the company is going to give that facility to the company for leasing. कमर्शियल पेपर जो होता है वो भी डिफरेंट कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स परचेस करते हैं, मीन्स बाहर से पैसा आता है. ट्रेड क्रेडिट जो होता है कौन देता है? सप्लायर देता है ना? सो सप्लायर इज द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो इसलिए वो एक्सटर्नल सोर्सेस में आ गया. एंड देन दिस फैक्टरिंग, राइट? जो फैक्टरिंग में मैं कहा था, आपका रिसीवेबल्स और कोई कंपनी खरीद लेगा, राइट? ही इज ऑल्सो ए पर्सन आउटसाइड योर बिजनेस, आपका बिजनेस से बाहर है, राइट? इसलिए वो भी आपका एक्सटर्नल सोर्सेस में आता है, right? Have you all understood, my dear students? So this is the classification of your sources of finance based upon the period, based upon the ownership, and based upon the source, right? So period का मतलब three types of period: long term, short term, and then medium term. On the basis of ownership, whether it's own funds or loan funds. On the basis of generation, whether it is generated inside the company or generated outside the business, right? This is the classification of your source of funds, right? So thank you so much. If you have any doubts, please mention it in the comment section. Definitely I'm going to give a reply, or otherwise you can contact me directly. Thank you so much for your patient listening, right? So please subscribe my channel, and please uh, see my videos, and please give your views on that so that I can update myself on recording these videos. Thank you so much. Have a nice time.